Good morning, guys. Very good morning, everyone. Welcome. Welcome to Unacademy, guys. आइए शुरू करते हैं. Welcome. Good morning, guys. Welcome to Unacademy. My name is Saurabh Jaiswal. Let's crack your 12 CBSE. A very brief introduction about me. I'm a faculty of Economics and Accounts. I've been teaching at 11, 12, as well as in C Foundation. And been, it's been 2 years then since we have been teaching at all these levels, and one thing has remained constant each and every time, that is conceptual learning. One thing will always remains constant, that is conceptual learning. So logics, पूरा फोकस किस पे रहा है हमेशा लॉजिक्स पे, राइट. चल, हाँ, अगर बच्चा आप नए हो, ठीक है, अगर आप नए हो अनअकैडमी पे, यू माइट हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज अनअकैडमी. अनअकैडमी इज एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म where you can come and learn in every subject, right. आप क्लास 12th में हो, ठीक है, अगर आप क्लास 12th में हो तो आप अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, फिर इकोनॉमिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है सारे सब्जेक्ट्स आप कर सकते हैं, राइट. बी इट कॉमर्स, बी इट साइंस, whichever field do you belong, doesn't matter, राइट. आप क्या कर सकते हैं, आप सारे रिसोर्सेज जो है अनअकैडमी के, सारे रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं. उस सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज कर सकते हैं. जो भी फ्री रिसोर्सेज है, जैसे यूट्यूब के वीडियोस हो गए, जैसे स्पेशल क्लासेस हो गए, उन्हें तो आप बिना किसी फी के आप एक्सेस कर सकते हैं. बट फ्यू रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड, ठीक है, उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, राइट. दिस इज सॉर्ट ऑफ अ ट्यूशन फी, राइट. सॉर्ट ऑफ अ ट्यूशन फी दो टाइप के हैं, एक प्लस और एक है आइकॉनिक, राइट. एक क्या है, एक है प्लस और एक आइकॉनिक. दोनों के बेनिफिट्स देखते हैं, ठीक है. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आइकॉनिक. You get daily life classes, okay. So in plus you get daily life classes, you get to interact with the educator then and there itself. काफी रियल टाइम में चलता है, ठीक है, काफी रियल टाइम में चलता है, राइट. प्लेटफॉर्म पे, या प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म, when you come, when you interact, when you have that experience, it doesn't feel like that you are watching that video online, because रियल टाइम रियल टाइम स्ट्रीम होता है सर, रियल टाइम स्ट्रीम होता है. जैसे ही जैसे ही आपने टाइप किया, जैसे ही आपने क्वेश्चन रेज किया, ऑन दैट मोमेंट इटसेल्फ, सर, इट विल पॉप ऑन माय लाइव क्लासेस का बेनिफिट. इंटरेक्शन बहुत इजी हो जाता है. Then, हमारे क्या होते हैं सर, लाइव पोल्स, ठीक है, टेस्ट एंड क्विज. टेस्ट कैसे लेंगे, इट्स थ्रू लाइव पोल्स. ये भी बेनिफिट किस में मिल रहा है सर, ये भी बेनिफिट हमें मिल रहा है प्लस में, भी बेनिफिट मिल रहा है हमें प्लस में. हाँ, हम पढ़ तो लेते हैं हमें खुद को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, टू टेस्ट आवरसेल्फ. हमें क्या सर, लाइव पोल्स अटेंड कर सकते हैं, हम अपना नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं. ये किस पे बेस्ड रहता है, ये एमसीक्यू पैटर्न पे बेस्ड रहता है, राइट. एमसीक्यू पैटर्न पे इसलिए बेस्ड है सो दैट हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़े. देन टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, राइट. आप सारी टेस्ट सीरीज देखिए, आफ्टर प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज आर अ वेरी important series are a very important thing that you might want to take up, because ये
फुल कोर्स, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स फुल कोर्स की होती है। यू कैन एनालाइज योर परफॉर्मेंस, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसा हुआ है, दूसरों के रिगार्डिंग हमने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। You can have this analysis to yourself. Then doubt clearing sessions, डाउट क्लियरिंग सेशंस ये भी कैसे होंगे, लाइव होंगे। ये डाउट क्लियरिंग सेशंस भी कैसे होंगे, लाइव होंगे। एंड एंड सर दीज आर लिमिटेड टू प्लस, राइट। और भी बेनिफिट्स है प्लस में, जैसे यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू व्यूज द नोट्स एंड टू ऑल योर सब्जेक्ट, राइट। आइकॉनिक में, आइकॉनिक के क्या बेनिफिट्स हैं? आइकॉनिक इज मोर, इट ऑपरेट्स मोर ऑन अ पर्सनल लेवल। सर ये वन टू वन इंटरेक्शन में बिलीव करता है, इट इज बेस्ड ऑन वन टू वन इंटरेक्शन। तो यहाँ पे आपकी पर्सनल मेंटरिंग होगी, ही विल बी योर पर्सनल कोच, आपकी पर्सनल मेंटरिंग होगी, आपके गोल्स, आपकी स्ट्रेटजीज, आपकी स्टडी प्लान, सारी चीज़ें डिस्कस करी जाएगी, ठीक है। आइकॉनिक में, आइकॉनिक में क्लियरिंग, डाउट क्लियरिंग भी कैसे रहेगी, एक्सक्लूसिव रहेगी, ठीक है। आइकॉनिक में डाउट क्लियरिंग भी कैसी रहेगी, एक्सक्लूसिव रहेंगी, इट विल बी ओनली लिमिटेड टू यू, ठीक है। डाउट सेशंस भी कैसे रहेंगे, ओनली लिमिटेड टू यू, राइट। डाउट सेशन भी लिमिटेड हो गए, फिर पर्सनल मेंटरिंग भी मिल गई, है कि नहीं। देन parental connect, parental connect is important, so we thought why not why, because देखिए हम जितना ज़्यादा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे उतना ज़्यादा you will be able to focus more on your studies, so that is one of the reasons, ठीक है। that is one of the reasons जिसलिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया है, जिसलिए हमने इंट्रोड्यूस किया है parental connect, right? And then obviously you get all the benefits of plus. What you have to do, you simply have to download the app, ठीक है। प्ले स्टोर से जाइए, आई स्टोर से जाइए, सर्च करिए, ठीक है, इंस्टॉल करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सिंपली देन सिलेक्ट योर गोल, ठीक है। क्लास में जाके हमने हमारा गोल सिलेक्ट करना है। हमारा गोल है सीबीएसई 12th। हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है सीबीएसई 12th। हाँ, after you select your goal, there will be various subscriptions that you can choose from. If your goal is 11th, ठीक है, you have all these variants क्लास में, ठीक है। बट हम 12th, हम किस में सर, हम कौन सी क्लास में, 12th क्लास में। हमारे लिए कौन से है सर, ये बच्चे जो 11th में ही है उनके लिए है। have a look guys, you have 6 variants, okay। 11th में हो तो you can take a subscription, 6 variants, 11 12 दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है। ये 11 12 दोनों, but if you are you want exclusively for, you want exclusively for 12th, तो यहाँ जाइए, तो ये वाले स्लाइड पे आइए। यहाँ पे 4 है, फिर 1 month, 3 months, 6 months and 12 months। अभी 6 months and 12 months तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। I would suggest go for 1 month or 3 months। 1 month is worth 3,000 and 3 months is worth 6.5। और आप अगर अगर चूज करना चाहते हैं, you should go for 1 month or 3 months, yeah। And if you apply this code SAJUYT, if you apply this code, what you'll get a 10% off, get a flat 10% off,
So 1 month you'll get in 2700. 3 months you'll get in 5850. Yeah, I would suggest go for 1 month, okay, or 3 months. And now it depends on you कि कौन सा लेना है, बिकॉज हमारी एग्जाम्स कब होने हैं? हमारी एग्जाम्स अभी मार्च, फेब एंड मार्च यही सीन रहने वाला है. So we have approximately 2 to 3 months, right? 2 to 3 months. So go for either 1 month. After discount, it is go for 3 months. Right? I would suggest maybe money 1 month. 1 month is good. Go for that. Then iconic maybe two plans. The 6, 12, and choose if you are willing to go. Again, you can choose that. SAJYT से अप्लाई कर दीजिएगा. 10% ऑफ मिल जाएगा आपको दोनों में. Right? You'll get that 10% off on both your subscription. Plus maybe an iconic name, but I am suggesting, not suggesting iconic right now. At this present time, I'm not suggesting iconic. I'm suggesting 1 month plus. ठीक है, तो मजा आ जाएगी. 1 month of plus and you'll be good to go. Alright, चलिए. नीचे एक टेलीग्राम की लिंक है बेटा, नीचे एक टेलीग्राम चैनल की लिंक है. उसे भी क्या करना है, उसे भी हमने ज्वाइन कर लेना है. टैप करिए, आपको प्रॉम्प्ट कर देगा ऐप टू ज्वाइन कर लीजिए फटाक से. उसमें आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते जाएंगे. राइट, उसमें आपको क्या रेगुलर अपडेट्स मिलते जाएंगे रिगार्डिंग ईच एंड एवरी क्लास. राइट, चलिए शुरू करते हैं. We were looking at the LPG. Right? We were looking at what? We were looking at LPG. हमने फिर इसके पहले वाली क्लास में शुरुआत कर ली थी, इंट्रोडक्टरी चैप्टर देख लिया था, इंट्रोडक्टरी सेशन कर लिया था कि why LPG is important, लिबरलाइजेशन ये देख लिया था. लेकिन आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे. हाँ, आप सभी को पता है, याद होगा LPG क्यों आया. because we were going through the 1981 से फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत हो चुकी थी. Right? We could trace it back to 1981, even though 1991 में the crisis सामने आए, but उसके लक्षण 81 से थे. Right? So what was this? सर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इतना बढ़ गया था कि हम बाहर से लोन उठा के सर हम इंटरेस्ट पे करने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं बच रहा था. ठीक है, हम इतने ज़्यादा किसमें डेफिसिट में आ गए थे. ऑलराइट, हाँ, we went to World Bank and IMF. ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, फिर इन दोनों के पास गए. बिकॉज तब तक ऐसा हो गया था, ठीक है, नो अदर कंट्री वाज विलिंग टू लेंड बिकॉज they could see that we are not able to even repay the interest. प्रिंसिपल तो दूर की बात है, इंटरेस्ट पे करने के लिए भी क्या नहीं बच रहा था, पैसा नहीं बच रहा था. So we went to World Bank and IMF. They gave us a loan of $7 billion. $7 billion. But there was some condition. It is suggested that our economy should adopt LPG. We should adopt what? LPG. Liberalization, privatization, and socialization. Why? Because
because through these policies, and through these, we were opening we were opening gates to other traders from outside India and as well as in India itself. Now, the liberalization, liberalization में क्या हो रहा है? Many private sectors were not allowed to do their business freely. Licensing and all, सर हर चीज में लगती थी. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सर प्रमोट करने के लिए क्या किया था? गुड्स स्पेसिफाई कर दिए थे कि आप ये गुड्स सिर्फ आप ही प्रोड्यूस कर पाएंगे. ये रिस्ट्रिक्शंस ला दिए गए थे. सर ये सही थे तब तक, ये सही थे सिर्फ पोस्ट इंडिपेंडेंस, to promote self-reliance. Okay, government sector was taking a huge chunk of the activity. It was necessary because वो टाइम पे क्या नहीं था, तो लोगों के पास कैपिटल नहीं था. ठीक है, लोगों के पास कैपिटल नहीं था, ना ही मार्केट था ये सब चीज़ों का. तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर could not grow. पब्लिक सेक्टर को ही ये चीज़ें आगे बढ़ानी पड़ी थी. बट बट आफ्टर फ्यू decades things changed. The economic condition of the nation changed, but the way of handling the economy, it did not. So we got to a situation where our deficit was so much. Our balance of payment was in a deficit. It was it was so much that we were not able to pay off the interest as well. Take on the debt. So we had to adopt. We had to adopt LPG. हमें क्या हमें LPG अडॉप्ट करना पड़ा. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. हाँ, आज आज क्या देखना है? आज देखना है प्राइवेटाइजेशन. We have seen liberalization in our previous videos, right? Let's focus on privatization. Huh. It implies sharing of ownership or management of government enterprise. Simple. Privatization मतलब क्या? गवर्नमेंट गवर्नमेंट से ओनरशिप हटा के पब्लिक सेक्टर में किसकी ओनरशिप रहती है? गवर्नमेंट की. ठीक है, ओनरशिप मैनेजमेंट गवर्नमेंट की हटा के किसे दे दी जाए? प्राइवेट सेक्टर को. That is what is privatization. Government companies are converted into private companies. There are two ways. Now, why it was necessary? Why it was necessary to convert public sector undertaking to private sector? Why? Because if we want a private sector, if we want a industrial sector to grow, तो उन्हें areas देने पड़ेंगे. Till till 90s, till 90s, majority of the essential industries were under government control. The public sector ही मेजर चंक के ऊपर बैठा था. प्राइवेट सेक्टर को उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं. Okay, so it was necessary that we should transfer the ownership from public sector to private sector. कौन से तरीके से हो सकते हैं? There are two ways. पहला, by withdrawal of the government from ownership and management of public sector. सबसे पहले तो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट हटा दी जाए. क्या हटा दी जाए? ओनरशिप एंड मैनेजमेंट हटा दी जाए. ठीक है, किसकी? ऑब्वियसली गवर्नमेंट.
ये एक ये एक ये एक तरीका है. This is one of the ways. This is one of the ways to convert public sector into a private sector. Then दूसरा तरीका क्या है? By outright sale of public sector. दूसरा तरीका है बेच दो. Yes. Second way is to sell off. The second way is to sell off the public sector to a private sector. ये एक पब्लिक कंपनी को बेच दो. किसे बेच दो? प्राइवेट को. ये इधर आप क्या करो? इधर बेचो या फिर हाँ ओनरशिप उसमें से हटा लो. In both ways क्या हो रहा है? Public sector is getting converted into a private sector, right? And that is what is privatization, right? Privatization of public sector enterprises by selling off parts of equities of public sector undertakings to the public is known as disinvestment. Known as what? Disinvestment. The purpose of sale, according to the government, was mainly to improve financial discipline and facilitate modernization. It was also envisaged that private capital managerial capabilities could be effectively utilized to improve the performance of public sector undertaking. Now, this investment तब होगा जब पब्लिक सेक्टर, ठीक है, गवर्नमेंट अपने अपनी होल्डिंग, ठीक है, तो किसमें लोगों में बेच दे. ठीक है, so that the ownership is transferred from the government to the private people, yet to the public at large. And इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था to improve the capital and the managerial capabilities. Right? The government envisaged that privatization could provide strong impetus to inflow of FDIs. Okay, they also had a vision that privatization would help in bringing in foreign direct investment. It would also help in it would also help in with foreign direct investment. ठीक है, because देखिए अब जब प्राइवेट लोगों के हाथ में है, ठीक है, तो anyone will come and invest if there are no restrictions, there are no controls by the government. Right? Everything is given in the hands of public. The government has also made attempts to improve the efficiency of PSUs by giving them autonomy in taking managerial decisions. For instance, some PSUs have been granted special status as Bharatmas, Navratnas, and Mini Ratnas. Then, globalization. Globalization. ये चीज privatization was simple. और एक privatization was quite simple. हमने क्या करना था? Sir, to expand, it, we needed, and government should intervene less. Okay, we needed that the ownership should get transferred. Okay? People should get involved. So, दो तरीके, either you withdraw your ownership, either you withdraw your managerial position or your ownership, or you sell. ठीक है, ये दो तरीके हैं. Then और क्या? Sir, और क्या? Privatization would help in bring FDIs. It would help in better capital management, and it will help in better management. These are the benefits
privatization can bring about. Like globalization. This was a very great step that was taken by our Indian economy. Although globalization is generally understood to mean integration of the economy of the country with the rest of the world, it is a complex phenomenon. Usually, usually globalization का idea क्या रहता है that our economy gets integrated with the rest of the world. मतलब हम क्या foreign trade कर सकते हैं, export कर सकते हैं. ये जनरल आइडिया तो ये है अभी तक. ठीक. It is an outcome of set of various policies that are aimed at transforming the world towards greater interdependence and integration. It involves creation of networks and activities transcending economic, social, and geographical boundaries. Globalization attempts to establish links in such a way that happenings in India can be influenced by events happening miles away. It is turning the world into one whole, formless. Right? Now, the globalization इंडिया बाहर जाके बिजनेस करे या बाहर वाले इंडिया में आके बिजनेस करे there should be no boundaries. Okay, that is what is globalized. To create a boundless world, okay, where people can come and trade without any restrictions. Just a second, guys. Right. So globalization helped nations. Globalization helped nations to grow, okay, by letting other people in and by letting the home country people go outside and work. Outsourcing. Okay, let's look at outsourcing. This is one of the important outcomes of globalization process. In outsourcing, a company hires regular service from external sources, mostly of other countries, which were previously provided internally or from within the country. Like legal advice, computer service, advertisements, security, each provided by respective departments of the company. As a form of economic activity, outsourcing has intensified in recent times because of the growth of fast modes of communication, particularly in the information technology sector. Now, globalization led to what? Globalization led to outsourcing. Now, outsourcing क्या होता है? You just let other people do your work. ये मैं क्या कर दिया? मेरा काम outsource कर दिया. You are not doing your work. You are hiring people to do your work. ये जो पहले क्या हो जाएगा? देखिए, by doing that, जो जो मैनेजमेंट है, ठीक है, सपोज the legal advice, if you outsource that department, your people can focus on more crucial things. ठीक है, आप क्या करते हो? आप ऐसे डिपार्टमेंट फाइंड करते हो, ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट्स आप देखते हो कि कौन से डिपार्टमेंट्स which I can outsource. This is not important that मैं या मेरी कंपनी इस पे वर्क करे, ठीक है, अदर पीपल कैन आल्सो हैंडल. आप क्या करते हो? तो जैसे सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स हो गए, कंप्यूटर सर्विस, आईटी सर्विसेज हो गए, इन्हें आप क्या कर देते हो? इन्हें आप आउटसोर्स कर देते हो कि इट इज़ बेटर कि दूसरे काम करें हु आर एक्सपर्ट्स इन दीज, ठीक है, वी आर नॉट. तो उन्हें हायर करते हैं. एक तो एक्सपर्टीज का बेनिफिट मिलता है. सेकेंड,
our manpower gets more concentrated, ठीक है, वो और फोकस से काम करते हैं, right? So globalization led to outsourcing, okay? And due to modernization, okay, due to fast growth of communication, so outsourcing became way easier. It became way easier, right? Many of the services, such as voice-based business processes, that जिसे call centers कहते हैं, right? Record keeping, accountancy, banking services, music recording, film editing, book transcription, clinical advice, or even teaching are being outsourced by company in different developed countries. So many countries are now outsourcing their businesses, which can be run remotely. ठीक है, अब देखिए कॉल सेंटर्स, ये कॉल सेंटर्स जो चलते हैं हर कंपनी के रहते हैं, ठीक है, हर कंपनी के रहते हैं। कॉल सेंटर में क्या ज़रूरत है कि वो कंपनी, तो सपोज यूएस की, तो यूएस में बैठ के कॉल करेंगे, नो, ट्रेनिंग अगर प्रॉपर मिल जाए, ट्रेनिंग अगर प्रॉपर मिल जाए तो वो इंसान यहाँ से भी बैठ के काम कर सकता है। सो यूएस वाले क्या करेंगे, यूएस वाले आउटसोर्स कर देंगे इंडियंस को, ठीक है। अकाउंटिंग का काम है, बैंकिंग सर्विसेज है, फिर ये सारी चीज़ें भी क्या हो सकती है, सर ये आउटसोर्स कर सकते हैं लोग। With the help of modern telecommunication links, including the internet, the text, voice, visual data in respect of these services is digested and transmitted in real time over continents and national boundaries. And सबसे important, it is possible due to our modern communication. ठीक है, it is only possible because our modern communication is doing so well. ठीक है, अभी अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे सर वी आर स्टार्टिंग, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई। सो बिकॉज ऑफ आर टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग इज वेरी इजी नाउ, ठीक है, आउटसोर्स करना बहुत आसान हो चुका है बिकॉज ऑफ modern day technology. Most multinational corporates and even small companies are outsourcing their services to India, where they can avail at cheaper cost and reasonable degree of skill and accuracy. The low wage rate and availability of skilled manpower in India have made it a destination for global outsourcing in the post-reform period. Right? The एक और reason outsource करने का क्या है? That you get people at cheaper rate with skills and accuracy. ठीक है, स्किल लोग मिल जा रहे हैं, ठीक है, एट चीप रेट, सो व्हाई नॉट। अब देखिए अगर आपकी यूएस में कंपनी, would you prefer to save money or to spend money? I would prefer to save money, right? तो मैं क्या करूँगा सर, मैं ऐसे लोगों को ढूंढूंगा, ठीक है, मैं ऐसे लोगों को ढूंढूंगा जो ये ही काम, ठीक है, स्किलफुली कर ले, बराबर से कर ले, बट एट चीपर रेट। मुझे अगर वो इंडिया में देख रहा है, मैं इंडिया में काम दे दूंगा, मैं इंडिया में काम दे दूंगा, मैं बोलूँगा भैया लो आप लोग संभालो, क्या आप लोग संभालो, लेकिन तो आउटसोर्सिंग हैज लेड टू, ठीक है, आउटसोर्सिंग हैज लेड टू कॉस्ट सेविंग एज वेल, राइट। देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल रहा? The World Trade Organization was founded in 1995 as a successor organization to General Agreement of Trade and Tariff, GATT. GATT was established in 1948 with 23 countries and Global Trade Organization to administer all multilateral trade agreements by providing equal opportunities to all countries in the international market. See, why was GATT established? So that everyone can do what? So trade with each other, and GATT was there to administer, ठीक है, कोई सर
कोई सर मिसयूज तो नहीं कर रहा है? Is everyone getting equal opportunity to work with each and every country? World Trade Organization is expected to establish a rule-based trading regime in which nations cannot place arbitrary restrictions on trade. Right? The WTO, World Trade Organization, क्या कर रहा है सर? It is allowing nations to trade freely. Again, no nation can impose, sir, restrictions. Again, no nations can put restrictions on trade, on international trade. In addition, its purpose is also to enlarge production and trade of services to ensure optimum utilization of resources, again, and to protect the environment. The World Trade Organization agreements cover trade in goods as well as in services to facilitate international trade. Removal of tariff as well as non-tariff barriers and providing greater market access to all the members. Yet due to globalization, now it was much more easier to do trade between nations. And World Trade Organization was helping to bring about a balance between the trade with each and every country. With the member countries, 23 member countries. As an important member of World Trade Organization, India has been in the forefront of framing their global rules, regulating and safeguarding and advocating the interest of the developed and developing world. India has kept its commitment towards liberalization of trade made in the WTO by removing quantitative restrictions on import and reducing tariff. Okay? Initially हमने the self reliance को प्रमोट करने के लिए हमने क्या, ठीक है, वी वांटेड कि कंपटीशन कम रहे या बाहर वालों का इंटरफेरेंस ज़्यादा ना रहे, so we imposed quantitative restrictions, we increased tariff rates, but it was necessary till a point, but उसके बाद it was necessary कि वो क्या हो सर, वो remove हो जाए. It has to be removed because तभी क्या होगा, तभी सर इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी जब बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आएगा. ठीक है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी डिप्लीट होने लगे थे, तो उसे एलपीजी अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी था. ये एलपीजी अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी था. एंड our commitment in the World Trade Organization about LPG has been kept till date. We have removed quantitative barriers on imports and reduced the tariff rates. That was it for today, guys. Right? आप सर एक इम्पोर्टेंट चीज जाते जाते नोट कर सकते हैं. So if you are on the Unacademy app and आपको कहीं भी सर क्या दिख रहा है, आपको बोल रहा है that you need to apply a code to unlock. आपने कोड कौन सा अप्लाई करना है? SAJYT. फिर ये कोड अप्लाई करना है टू अनलॉक व्हाट, टू अनलॉक एवरी कंटेंट. ठीक है, जहां भी आपको दिख रहा है तो अभी बोल रहा है कि इनवाइट कोड डालिए. आपने कौन सा कोड डालना है? SAJYT. राइट. The code which you have to use is SAJYT. सिंपली क्या करें, ऐप खोलें. ठीक है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप खोलें. जो मेन्यू सेक्शन रहता है, go into that, go into the special class section. ठीक है, फ्री क्लासेस, लाइव फ्री क्लासेस या स्पेशल क्लासेस, वॉच एनी क्लास. ये जो भी लेक्चर आपको देखना है वो देखिए. यूज द कोड. ठीक है, वो पूछेगा सर इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम लर्नर इट विल आस्क टू एंटर एन इनवाइट कोड. आपने कौन सा डालना है सर? SAJYT. राइट. कौन सा कोड डालना है? SAJYT. यही कोड
The same code can be used to attend our quizzes. The quiz ज्वाइन करने के लिए भी you'll have to enter the same code, SAJYT. Right, to join any quiz you will have to enter the same code. ये क्या है? ये हमारा क्लास कोड है गाइस. इससे दे बेनिफिट्स बहुत है. इसे आप रट लीजिए. एक ही चीज बोलूंगा जो रटनी है. SAJYT रट लीजिए. इससे क्या क्या, एक तो डिस्काउंट मिल रहा है, एक तो क्विज़ेस को एक्सेस मिल रहा है, और फ्री कंटेंट. एक कोड 3 बेनिफिट, ठीक है. तो याद रखिए SAJYT. हाँ गाइस, 20 दिसंबर, ये 20 दिसंबर को देयर विल बी करियर क्वेस्ट. ठीक है, करियर क्वेस्ट हमारे अनअकैडमी पे ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. ये इट इज अ फ्री समिट. ठीक है, वेरियस वेरियस फील्ड से लोग आने वाले हैं, so that you get an idea, you get an idea about various fields. ये आप अटेंड करिए, देखिए और कौन कौन सी, सर और कौन कौन सी फील्ड्स है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. राइट, वी हैव कुणाल विजयकर, लिप रॉस, शबनम पांडे, गौतम बेमानी, सर अलग अलग फील्ड से है सब. So you know Kunal Vijayakar very well. Yeah. He's a television personality as well as a food writer. Philip Ross is a very famous wildlife photographer. Okay. Shabnam Pandey is a lawyer and a politician. Okay. Gautam ji, sir, commentator, cricket commentator and a DJ as well. And Arun is as a VJ and RJ. बहुत सारे अलग अलग बस क्या देखने मिल जाते हैं सर, अलग अलग करियर पाथ्स. ठीक है, so we have brought about few of these people to help you out to decide where you like to go. कब हो रहा है, कब हो रहा है ये सर? 20 तारीख को होने वाला है. 20 तारीख को होने वाला है एंड 10 सुबह 10 से 6 बजे तक चलेगा. ठीक है, आप आइए, कभी भी आइए, ज्वाइन करिए. ठीक है, trust me guys, it will be a very different experience for each and every one of you. All right, चलिए, thank you so much guys, thank you so much for tuning in. Do subscribe to the channel, right? Do subscribe to the channel, hit the bell icon. ठीक है, नोटिफिकेशन टन टन करके आ जाने चाहिए, है कि नहीं? एंड जाते जाते सर याद रखिए इसे, ये आपके बेनिफिट, ये आपके बेनिफिट के लिए है. ठीक है सर, 3 क्या मिल रहा था इससे? 3 बेनिफिट मिल रहे थे. जस्ट रिमेंबर दिस, SAJYT, ये हमारा क्लास कोड है. राइट, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस. आप लोगों से मुलाकात होगी अब कल. ठीक है, कल हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे. राइट, देन we'll do a quick revision एंड उसके बाद क्या रखेंगे? उसके बाद रखेंगे मैराथन सेशन. ठीक है, तो 3 चैप्टर्स को क्विकली एक ही वन गो में रिवाइज करेंगे. राइट, कौन कौन से? प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड LPG, ये तीनों को फटाफट रिवाइज कर लेंगे. राइट, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. आई होप यू हैव अ ग्रेट डे. गॉड ब्लेस.